Hello, guys. A very good evening to you all. To all my viewers, to all my dear friends, and my dear students. I hope that you all are working harder than hardest in order to achieve success, to achieve glory in your career, right? Today, the questions which I have taken up for discussion is one is relating to anticipatory bail. The another one is that legal aid at the state expense, legal aid to the accused at the state expense is given under which section of CRPC and the jurisdiction of the Supreme Court of India, whether it is only original or appellate or advisory or whatever, all three. इन तीनों क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के अभी के वीडियो में एंड आई होप दैट यू ऑल वुड लाइक इट. The first question which is there for the discussion tomorrow is before you. The question is that jurisdiction of the Supreme Court of India is, Supreme Court का jurisdiction किस तरह का है, किस नेचर का है. पहला ऑप्शन है appellate only, दूसरा ऑप्शन है ओरिजिनल ओनली, तीसरा है ओरिजिनल एज वेल एज appellate और चौथा है ओरिजिनल, appellate and advisory. The right answer is original, appellate and advisory. That is option fourth. Option D is the right option. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आप सब लोग समझते हैं कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं. अपेलेट क्योंकि अपील कर सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द जजमेंट गिवन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री. तो सुप्रीम कोर्ट के पास फाइनल अपेलेट जुरिस्डिक्शन है, अपेलेट अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट, और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, राइट. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है. तो ये तीनों जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है. दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. सेकंड क्वेश्चन which is there for the discussion is that jurisdiction to release an accused on anticipatory bail is not with. एंटीसिपेटरी बेल पे अक्यूज्ड को छोड़ने का जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट के पास नहीं है. पहला ऑप्शन है हाई कोर्ट, दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, तीसरा ऑप्शन है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चौथा है बोथ बी एंड सी, दैट इज सेशन कोर्ट एंड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट. माय डियर स्टूडेंट्स, as you all know that the CJM court, the chief judicial magistrate court, is not having the jurisdiction to try out the anticipatory bail case, to hear the anticipatory bail case. The primary jurisdiction for the anticipatory bail is the session court, right, is the session court, and if it is rejected by the session court then it is before the honorable high court. तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन है एंटीसिपेटरी बेल हियर करने का, एंटीसिपेटरी बेल पे अक्यूज्ड को रिलीज करने का, क्योंकि हियर करेंगे तभी रिलीज करेंगे. लेकिन सीजेएम कोर्ट के पास, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं है, राइट. आई होप दैट इट इज वेरी क्लियर. एंड द थर्ड क्वेश्चन नाउ is the legal aid to the accused at the state expense is a provision of law under which section of the CRPC, the Code of Criminal Procedure or the Criminal Procedure Code. किस सेक्शन के तहत लीगल एड अक्यूज्ड को स्टेट के एक्सपेंस पे दिया जा सकता है. तो इसका प्रोविजन है सीआरपीसी के तहत सेक्शन 304 ऑफ सीआरपीसी. इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 301, 302, 303, 304. तो सेक्शन 304 इज द राइट ऑप्शन, राइट. ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपसे डिस्कस करता हूं हर दिन, ये सारे क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इनन्यूमरेबल टाइम्स, राइट,
and that's the reason that I am discussing only those questions which are so heated. There is a huge probability that it can be asked in the upcoming competitive examinations, and that's why we are discussing it one by one. We are taking up few questions every day and we are discussing it for you, for your benefit, for your increase in the final merit list marks, right? And I hope that it will reach to the required candidate with the required precision, and it will help you increase the marks which you are scoring in your exams, right? And you know that in competitive exams 1 mark is critical enough. 1 mark is more than enough to throw you out of the competition, to throw you out of the merit list. Each and every single mark counts. So my dear students, all my dear students and all my dear aspirants, please start working harder. There is no other way to achieve success. There is no shortcut in life. You will have to pull up your socks. You'll have to burn the midnight oil. There is, Rome was, not built in a day. And I can assure you that if you work hard, success will be yours, glory will be yours, the world will be at your feet, right? Hard work never goes in vain. I have seen it in the 13 years of my career, right? We have made 431 judges, thousands of lawyers and legal advisors, and I can say with utmost confidence that if you work harder, then there is no point that why success will not be yours, why success will not come to you. It's bound to come to you, right? Success is waiting for you round the corner. Just keep working hard, keep grinding, and the world will be yours. The stage will be yours. You will be the showstopper. Thank you everyone for watching me. Stay tuned on the India's biggest law learning platform, the Chanakya Judicial Academy and Chanakya Clad Classes YouTube channel. Thank you guys. Jai Hind.